क्या क्या नहीं करना है। अभी तक तो हमने देखा क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है। डोंट टेक इट पर्सनली। इफ यू विल टेक इट पर्सनल, एग्जाम के बाद यही होगा कि यार सी सेट नहीं हो रहा, जीएस हो रहा है। इन पर्सनल इन द मीन्स किसी क्वेश्चन के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करना कि लाइक 10 मिनट 15 मिनट 7 मिनट्स। इवन इफ यू आर थिंकिंग लाइक इट्स 2 मिनट्स एंड यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, मूव ऑन। डोंट स्पेंड द नेक्स्ट मिनट टू दैट क्वेश्चन एज वेल। अगर 1 मिनट में क्वेश्चन समझ आ रहा है ठीक ठाक, डू स्पेंड द टाइम। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इन द फर्स्ट और सेकंड रीडिंग, प्लीज लीव द क्वेश्चन एंड मूव ऑन। यू कैन कम अगेन। आपसे क्वेश्चन को पेपर कोई ले नहीं रहा है, यार मेरा पेपर वापस ले लोगे, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो यू कैन मूव ऑन, यू कैन लाइक गो थ्रू द 80 क्वेश्चन विद इन द 40 मिनट्स, ताकि आपके पास आइडिया तो हो, या जो आता था वो मेरा हो गया, अब मुझे वो चूज करना है जो टाइम टेकिंग है, तो आई विल डू दैट। तो डोंट टेक इट पर्सनली फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, because you require only the 67 marks, not the 180 marks. Okay, and the time is only 120 minutes. Second, playing ultra safe. कुछ से कैंडिडेट्स होते हैं, मैं सिर्फ 35 करके आऊंगा, आई विल डू ओनली 35। मैं 35 करेंगे और मुझे कॉन्फिडेंस है कि 35 आई विल गेट इट करेक्ट, बट व्हेन दे आर कमिंग होम दे विल फाइंड कि 30% रॉन्ग हो गया यार। तो 30% रॉन्ग में मीन्स 10 क्वेश्चन आई एम गेटिंग रॉन्ग, एंड फ्रॉम 10 क्वेश्चन 1/3 इज नेगेटिव, आई एम गेटिंग ओनली 22 क्वेश्चन राइट, मीन्स द 55 मार्क्स आई एम गेटिंग देयर। सो अल्ट्रा सेफ भी नहीं होना है। तो यू शुड बी लाइक अटेम्प्टिंग इन द रेंज ऑफ 50। If there is 30% wrong, then you can easily qualify there. So the range can be different for the different person. We will also discuss कि किसके लिए क्या range होना चाहिए. And the third one, don't underestimate CSET. जिसने underestimate किया है, it cost them the 2 years. If you are underestimating it, it will cost you the next 2 years of preparation. You are starting preparation from the June 23, and it will give the final result in the June 25. Means a 2-year lag. If you underestimate this examination, it will be a 2-year lag in the IAS formation. आप IAS बनने में 2 साल का गैप और बढ़ जाएगा। तो should be clear कि underestimate नहीं करना है। नेक्स्ट, अभी एग्जाम से पहले क्या करना है, कैसे तैयारी को शुरू करना है। आप लोगों को मान लो कि यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, कुछ नहीं आता है, हाउ टू गो विद द प्रिपरेशन देयर। नंबर 1, एनालाइज PYQ. First of all, take up the PYQ after 2014, analyze the PYQ, mark the topics there, identify the topics. You will hardly find from the QA there are 12-13 topics. From the logical reasoning, 4-5 type of reasoning. From the reading comprehension, the similar type of reading comprehension asking, but we need to focus on the type of logical reasoning they are asking about, type of quant question they are asking about, from the number system, it's from the ratio, it's from the time speed distance, from the time and work, it's from probability. So we need to identify those topics from where the major focus of the UPSC there. तो वो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। Second, before starting the preparation, attempt the 3 previous year question there. If you are getting the marks in the range of 90 to 110 without any preparation from the last paper of the UPSC in the 2 hours, means you are on a safer side. There is no need to panic. You can do it in the last 15 days as well. Focus on your GS first. Then you can go to the attempt the 5-6 paper from the market, and then you can go to the examination and you can easily qualify them. If you are scoring in between 70 to 80, you are on the border. आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, because without pressure you are scoring 70 marks in this examination, means in pressure you will go to the 40-45. So it should be, आपको analyze करके you will sit for like 2 months before of the examination. You can do that. Do 1 hour a day, daily basis पे 1 घंटा करना 2 महीने तक. You should easily qualify. And now comes those who are scoring between 30 to 50 now. The third category, scoring in between 30 to 50. 30 से 50 वाले के लिए आज से ही शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई क्या पूछा गया है, क्या टॉपिक्स हैं,
Then start preparation topic wise instead of taking a book and going for a like book पढ़ना है 20 पेज का चैप्टर नंबर सिस्टम है 10 थ्योरी है जो किसी काम की भी नहीं है. Choose the topics. I will start with the remainder first. See the sum of the basic idea behind the remainder. क्या strategy लगती है solve करने में. There are the 4-5 types of the remainder question maximum. तो उन 4-5 टाइप के क्वेश्चन में कैसे सोल्व किया जाता है, you should look into it, and then you can go to the any website or the take any question paper of the remainder and start solving those questions. So you will get an idea in the 3 days. Remainder is okay now. If I am any doubts with the remainder, I can ask to my teacher. Or if I am okay, then I will move on to the next topic. So we are having the approximately 20 topics. सबको मिला के 20 है. रीजनिंग को भी मिला के, क्वांट को भी मिला के. If I am giving a 3 days, 1.5 hour daily, in a 60 days, in 2 months, I will be okay with the CSET there. So I can score the 100 marks if I am doing this strategy, and it will be the easily doable there. Third one, divide your preparation topic wise as per the PYQ. You are identifying the topic, like in the GS, you are identifying in the polity, you identify fundamental rights. You are identifying the DPSP, and you are also identifying some of the other topics. Similarly, identification for the CSET and attempt according to those questions. Next, practice. जो आप लोग करते नहीं हो. Practice make a man perfect कहा गया है, but practice in the right way. I can say if you are taking a SSC book, ये भी एक ट्रेंड है. बंदे उठाएंगे SSC की बुक उठा लेंगे, बैंकिंग IBPS की बुक ले आएंगे, एंड CDS की बुक भी ले आएंगे, कैट, हाँ क्वांटम कैट बहुत फेमस है, वो भी लेके आ जाएंगे. चारों का कोई रिलीवेंस ही नहीं है आपके पेपर में. There is no relevance of these books in your examination. Just some basic fact. सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, आइडिया बिहाइंड द टॉपिक्स, कितने टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं. Like in the time, speed, distance, there can be the 4-5 type of the questions. Trains are going in the opposite direction. Trains are going in again in the opposite direction, in the same directions. There is some stoppage in between the trains. Trains are starting after 1 hour, and the second train are starting after 2 hours. So this kind of the question they can be asked. तो उन चारों क्वेश्चन में किस तरीके का बेसिक्स आइडिया होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए. तो क्यों ऐसे इन बुक्स के जो हजार क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, क्यों आपको वहां पे जाना. डू दिस टॉपिक, identify the PYQ from the last 10 years, attempt first those question first, then again go to the L2 question from some other websites you can easily find on the internet. अब तो chat GPT भी आ गया, बता देगा on which site I can attempt the remainder questions, on which site I can attempt the time speed distance question. Google Bard भी आ गया, तो you can ask there. Read newspaper for comprehension. सबसे जाने पहचाने ही है, रोज न्यूज़पेपर घूमते हैं लोग लेके मार्केट में, ऐसे पढ़ते हुए भी चलते हैं कुछ तो. Some of the sitting outside the class and reading the newspaper. So basic idea GS के लिए तो important है ही, but for the like CSET, it's a reading habit. कितना fast पढ़ते हो और understanding के साथ पढ़ते हो. So if you're reading one editorial on daily basis, if you're ending up those editorial in the 7 to 10 days, 7 to 10 minutes. 7 to 10 minutes में पढ़ रहे हो और आपको editorial समझ आ रहा है ठीक ठाक, so you are going in a good directions. If you are taking a 2 hours in reading an editorial, तो पेपर का टाइम ही 2 घंटे है. ओके, तो do according to that. Choice of question is very important. तो आपको जैसे इनको समझ आई मूवी खत्म होने के बाद, आपको पेपर खत्म होने के बाद समझ आएगा कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था. तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, इवन द CSET और इवन द GS. आना ना आना कोई मैटर नहीं करेगा अगर आप चॉइस नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस की. तो 2 स्ट्रेटजी, आना चाहिए और अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए. तो 2 लॉजिक्स इन द UPSC प्रिपरेशन. सो द चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट देयर. हाउ टू चूज अ क्वेश्चन एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन. देन चेक टाइम. सेट एन अलार्म फॉर द ईच 20 minutes. Alarm means like you can your watch, digital watch तो लेके allowed नहीं, but you can see your watch every 20 minutes. In each 20 minutes I will divide the slots. Like there is a 120 minutes in the paper, so I can divide the slots in the 6 slots. In each slots I am targeting, in the first slot I am targeting the maximum question that I can do. In 20 minutes I am targeting the 20 questions because those are the very easiest one
and I can solve within a minutes or within seconds. So I can target the maximum question in the first slot. Then the second slot, I will reduce the numbers to a 10, 12. Then again, I will go, if I go to the RC, I can attempt the like a 8, 10 RC in this one. Then I will go to last one, like a 5, 6 question there. In the last 21, जिससे मुझे प्यार था, I will come to that question. I will attempt to 3, 4 question there, and in the last I will go to the 5 question or the जो मुझे लगता है कि मुझे attempt करना चाहिए, but I have confused between the options there. So I can go. If I count these question number 20, 30, 38, 43, 45, and 50. So 50 is the confident question you are marking through this strategy. If you are increasing the number here, 1, 2, 3, 4 number here, so you can go to the like a 60 question as well. But जरूरत नहीं है. If you are attempting the 50 questions with the accuracy of 70-75%, you are qualified. आप लोग qualify कर लोगे easily. Range of questions. यहाँ पे category है. Depend on the accuracy. In your practice, you will find your accuracy is like the 50%, 50-55% only. In that case, you need to attempt like this above 65 questions. If I can say if I am attempting the 60 questions and my accuracy is only the 50%, I am getting only 30 questions right here. And out of 30, there is a negative marking also, so 10 also deduct from here. So I am left with only the 50 marks. I left only with the 50 marks. So अगर मैं 60 question भी attempt कर रहा हूँ 50% accuracy, I am not able to qualify there. If I am attempting the 60 questions with the 70% of accuracy, 60 question with the 70% of accuracy means I am correcting the 42 questions there and I am getting the incorrect 28 questions there. So 9 question can be deducted for the negative one. So I can get a score of like a 33 questions finally. I am getting a 80 marks here. So I can easily qualify. So minimum requirement of accuracy is 70% when you are attempting the 60 questions. If you are attempting the 50 questions, then I cannot afford accuracy below 80. So I need to be accurate 80 to 85% if I am going to attempt the 50 questions. So yes, this should be clear in your mind. So whenever you are attempting the paper, you should be calculating on how much accuracy I am doing there. If you are doing accuracy, then attempt a question according to that range only. So this is the final one here कि range क्या है. And the final, stay hydrated. गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. For the glucose high level, you need to eat some of the chocolates there. You can take, UPSC रोकता नहीं है. You can go there with some chocolates. So this is the final strategy for the CSET. बाकी strategy से होगा कुछ नहीं जब तक पढ़ोगे नहीं. So the final start according to which category you are filing it about. So please start doing according to that. And if you are having any doubts regarding the CSET, you can directly text me or you can contact to anyone in the Educami. So we'll let you know how to do it. Okay.